So, good evening everybody, welcome to WIDYAKAR online classes. So, this is a new week because Monday was a holiday. So, for me it's the beginning of a fresh week with a fresh mind. So, let us start. Before we wind up, before we start our things with all seriousness, let me give you the results of that the Kaun Banega Topper contest, where most of you have attempted only the compulsory paper. No one turned up for the literature paper. Anyway, this is Jeet 73.75 out of 100. Congratulations. Sonal Patnaik 70 out of 100. Chittaranjan 70 out of 100. Jaydev Mandal 70.75 out of 100. So, all three are clubbed together. Then Pragya 67.75, Sujata Das 67.5, Pragya Das 64.25, Rabindra Nag 58, Geeta Smita Sahu 53.75, Sushila Mishra 52.5. Anyway, this is the evaluation of your performance. Anyway, but I will always say that don't get disheartened, because if you go on trying, you have still time with you. And you have to work extra hard and harder and harder and harder. The more you work hard, the better will be your result, or the better will be the prospect of cracking the written examination. Okay. Now, because I am here khali advise kar paribi. Ultimately, padhiya the responsibility tam manakar. Padhiba tame जे जहाँ ट्राई कर ठकिया भी से निजु को ठकिबो, ताऊ का को ठकिबो से निजु निजे ठकिबो. तो अल्टीमेट गोल समस्त गोटे, हाउ टू क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन विथ बेटर मार्क्स. कारण जे रिटन जिते भल मार्क रहिबो तमर भाईबारे खराब हेले भी तमे यू विल डू इट, तमे यू विल गेट सिलेक्टेड. बट रिटन मार्क जदी एकदम बॉर्डर लाइन रे रहिबो, यू हैव टू डू एक्सीडिंगली वेल इन द भाईबा. Then only you stand a chance of getting selected, otherwise not. Question गुड़ाक सेमिति किछि डिफिकल्ट आसे नाही. Questions गुड़ाक जो गुड़ाक मु जति के questions देखुची, जो पिला टेक्स्ट गुड़ाक thoroughly पढ़िछि, CBSE ICSE स्कूल माने करे right from prep तो से माने कहंती पिला को जे each and every word by word टेक्स्ट को पढ़िबो. आ सेही पिला जेमती 10th पास कर जीवो तो 11th रु आरंभ कला तार नोट पढ़ा, टेक्स्ट दूरे दूरे जाए. तो जो पिला टेक्स्ट गुड़ाक भल पढ़ी देछि, एटलिस्ट दिथर पढ़ी देछि, से पिला पे केभे कोनोसी ना को नेट कष्ट हबो, किछि कोनोसी एग्जामिनेशन कष्ट हबो नाही. ओके. एनीवे, सर्प्राइजिंग नोबडी लाइक्स. हमारे जो क्वेश्चंस गुड़ा को करथिले, 50 questions I think we had completed. So this is Ssb Pgt English 2023. Now question number 50, who was Matthew Arnold influenced by for his touchstone method of critical evaluation? That was, I said last time I also discussed with you, it was Longinus, who has a theory of sublime, because option A is the right answer. It is not Horace, it is not Plato, it is not Aristotle, because Matthew Arnold, तांकर जो study of poetry, जो essay लिखिथिले in study of poetry, Matthew Arnold भाभी करो, according to Matthew Arnold जे कौन गोटे कहीदेले से होची बेदर गार, that's not there. ये तांकर opinion से देले, से कहले ये seriousness रहिबो poetry. Poetry will replace religion, poetry will replace philosophy, history, सब को replace कर दो. Poetry सब किछि, and the poetry should be sublime. The level of थिबो, how it should be serious. It should instruct, because से कहितले poetry at the bottom is a criticism of life. So ए सब जिंस गुड़ाक मैथ्यू आर्नल्ड study of poetry कहिसंती. So in the study of poetry,
तो तांकर गोटे टचस्टोन मेथड ही हैड प्रपोज्ड. So what is the touchstone method? The touchstone method है सीए तांकर होमर दांते एमान को शेक्सपियर मिल्टन एमान को रखिले ग्रेट पोएट्स तांकर किछ किछ लाइन्स पैसेज से काढिले. तमे जो पोएमटा लिखि देइथो तांकर टाइम रे जो म लिखुतले बिकॉज़ आर्नल्ड टा कोन 20th सेंचुरी के लिखि आर्नल्ड वाज नॉट अलाइव ड्यूरिंग हिज व्हेन ही वाज अलाइव जो विक्टोरियन पीरियड से बंची थिले तो कोन छोटे पोएम से पढिले ताको से कंपेयर करी से पैसेज गुडा करे आइदर होमर हो दांते हो शेक्सपियर हो मिल्टन हो तांकर पैसेज से देखले हां ये ठीक मैच करूची तो ये गोटे क्लासिक इज अ गुड पोएम. जदि मैच न कला इट इज अ मीडियोकर वर्क. That is the reason why he said Chaucer बहुत भला. He has changed, he has contributed a lot towards the development of English language. Into because Chaucer lacked high seriousness, ସେଥିପାଇଁ ସେ Chaucer को great poet କହିଲେ. It was a wonderful poet, that's right. किंतु गोटे classic level को जिबार extremely high standard को जिबाको से देले ताकू नहीं. Okay, so it is Longinus. Which of the following new critics put forward the idea of the heresy of paraphrase? A. John Crow Ransom, B. Cleant Brooks, C. William Emerson, D. Monroe, C. Beardsley. So, which new critic? New criticism 20th century आरंभ हला. Usually modern माने T.S. Eliot feel करंती कि Matthew Arnold is the father of new criticism. कारण से जो objective method टा आरंभ कले because objective method निजर पर्सनल इमोशन फीलिंग्स से ता भीतर रखी नांती से कहले जे ऑब्जेक्टिव मेथड ए जिंस खाली सिंपली एटा थवाइची जिंस खाली कंपेयर कर जे से ता सही लेवल को पड़े आसला तो क्लासिक से लेवल नुहे तो क्लासिक नुहे. so it was an objective analysis. so new criticism आसिला जे 20th century रॉबर्ट पेन वॉरेन देन एलन टेट J.W. John Crow Ransom Cleant Brooks, T.S. Eliot, एमाने सब न्यू क्रिटिक. I.A. Richards. तो एमाने जो न्यू क्रिटिसिज्म है तांको भीतर क्लियंट ब्रुक्स भी जणे थिले who said the entire जिंस what is the heresy of paraphrase. The option is Cleant Brooks. Option B is the right answer, Cleant Brooks. I would say what is the heresy of paraphrase. Now heresy of paraphrase माने कौन कहले ये पैराफ्रेज गोटे पोएम से माने कहले ए माने मोस्टली पोएट्री को नेले से माने कहले जे क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म इज द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विदाउट गोइंग इनटू द बायोग्राफी और द हिस्टोरिक रेफरेंस ऑफ द पोएट. केबे जन्म होइतले को कंट्री रे हितले कोन ए तांको बायोग्राफी जाना दरकार नहीं लाइफ विषय जानिया दरकार नहीं तमे जेकोन से गोटे पोएम टाको नै जीवो. तो धरनी गोटे पोएट्री कलेक्शन ऊपर पेज चिर दबो तो तमे जानि परिबनी के लिखछि तो ताको तमे पढिबो ताको तमे एनालिसिस करिवो कोन फिगर ऑफ स्पीच यूज हेछि कोन सिंबल्स यूज हेछि इमेजेस कोन हेछि ताको नै के तमे एनालिसिस करिवो पोएम टाको. तो एटा हला न्यू क्रिटिसिज्म. A new criticism भीतर ब्रॉइले क्लियंट ब्रुक्स where the well wrought urn गोटे urn जोटा कि से किड्स करो ओन ऑन द ग्रेशन अर्न नै छथि सेही जो बहिटा लिखिले सेतरे से लिखछन्ति अबाउट द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेजिंग. तो सेमाने क्लियंट ब्रुक्स said that what is important in poetry or any work of art, the poetry is the literariness of the work of art. literariness कौन ना जेंती वर्ड्सवर्थ कहले there is no difference तांका preface to lyrical ballads से कौन कहले से होचंती सो romantic critic. so he said in his preface to lyrical ballads okay, there is no difference, essential difference between the language of poetry and the language of prose. समान लैंग्वेज. बट क्लियंट ब्रुक्स कहले नो गोटे वर्क ऑफ आर्ट तुम ताको गोटे पोएम बोली केमती कहबो से पोएम रो गोटे लिटरेरीनेस अछि जेमती ब्यूटी सेमती लिटरेरीनेस ऑफ द पोएम इज देयर.
तो तेणु तुम गोटे पोएम तार गोटे पोएम मल्टीपल मीनिंग बाहर न्यू क्रिटिसिज्म रे कौन कहगला जे ए पोएम और अ वर्क ऑफ आर्ट एनी टेक्स्ट रो गोटे मीनिंग केबे न हबनी दे आर मल्टीपल मीनिंग विभिन्न लोक विभिन्न पर्सपेक्टिव रे एनालिसिस करिकरी तार बहुत गुडे मीनिंग बाहर करि पारिबे तेणु गोटे पोएम रे तार गोटे समरी अच्छी कंटेंट अच्छी प्रति जिनस एनी वर्क ऑफ नॉवेल हो पोएम हो तार दीटा पार्ट अच्छी गोटे है फॉर्म आ गोटे है कंटेंट आ गोटे है कौन कंटेंट कंटेंट है कौन फॉर्म है स्ट्रक्चर कंटेंट है थीम तो फॉर्म टाको तुम केमी पैराफ्रेजिंग माने कौन तुम शेक्सपियरियन लैंग्वेज को तुम पुणी सिंपल मॉडर्न इंग्लिश रे ताको पैराफ्रेज करछ ट्रांसलेट करछ ट्रांसलेट नॉट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज तो आमे जो पोएम टाको एनालाइज कर समरी करछु से कहले पैराफ्रेजिंग होची इट्स रॉन्ग बिकॉज तमे 100% से पोएम टाको तमे पैराफ्रेजिंग करि पारु ना हो काहे ना से पोएम टाको एज सच द स्टैंजा स्ट्रक्चर ताकू जो देखा जाउची से पोएम रो जो स्ट्रक्चर से जेन देखा जाउची से देखा जाउट तमे केमते समय हाउ विल यू पैराफ्रेज इट यू कांट ये पोएम तमर हला पोएम रो मीन समरी हला एटा और तमे जो पैराफ्रेजिंग करके ता समरी बाहर कर देला बा एनालिसिस कला सेठी कोन तमे 70% ऑफ द पोएम टाको पाइलो किंतु से पोएम रो स्ट्रक्चर माने जेमती गोटे तमे जण को देखिनो तमे ताको खाली तार जस्ट एनालिसिस तार ब्यूटी टाको डिस्क्राइब करछो किंतु से ब्यूटी जो डिस्क्राइब करछो दैट इज नॉट 100% डिस्क्रिप्शन कैन तुम देखिले तुम जानि परिबो एक्चुअल ब्यूटी कोन तो सेमिति हेरेसी ऑफ पैराफ्रेजिस दैट क्लियंथ ब्रुक्स तांकर इटा क्लियंथ ब्रुक्स कहितले तो इट इज रॉन्ग कौन से पोएम को तुम 100% पैराफ्रेज करि परिबो नाही While elucidating his theory of impersonality, T.S. Eliot cites an analogy of a chemical reaction with the use of a metal catalyst. Identify the metal. A. Silver, B. Platinum, C. Copper, D. Zinc. And T.S. Eliot, tradition and the individual talent गोटे essay लिखिते okay in that essay T.S. Eliot तांकर करछंती what tradition is what is theory of impersonality से तीनटा पार्ट रे ताको डिवाइड करछ what is tradition what is theory of impersonality and what is and finally the conclusion. So T.S. Eliot तांकर theory of impersonality से कहले जे the poet is the man who is a poet and the artist poet are two different things. माने मु as a human being as a person and I as a writer are two different things. I as an artist, I as a human being, we are two different entities. More so T.S. Eliot को एटा थला reaction to romantic poetry. Romantic poetry होची कोन purely emotion and feelings. It's an expression of feelings and emotion. So T.S. Eliot कहितले जे तमरो व्यक्तिगत personal feeling emotion तमे सब जिंस से poem रे भर्ती करी कि सब poem टा को objectively like objectively तुम एनालिसिस करबा सब्जेक्टिव जिंस रहिबो नाही द पोएट रो इमोशन फीलिंग ता भीतर रहिबो नाही जहा रहिबो ता भीतर सब मिसी जाइतिबो किंतु सेति पई से कहितले जे पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन एंड इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी इट इज एक्सप्रेशन फ्रॉम पर्सनालिटी तो सेति में पर्सनल इम्पर्सनल दैट इज व्हाट T.S. Eliot said in tradition and the individual talent. Okay, so सी कहते in the theory of impersonality सी गोटे एनालिसिस करछंती तो एति के बेसिक केमिस्ट्री सब पिला 10th 9th 10th रे पढिथिबो जानिथिबो गोटे केमिकल रिएक्शन को एनी केमिकल रिएक्शन
तमें ताको एक्टिवेट करिया पे टिके विगरस करिया पे टिके जोर जोर करिया पे केमिकल रिएक्शन टाको we normally those who undertake the experiment they use a catalyst. Catalyst माने कौन ये अन्य टाको रिएक्शन टाको शीघ्र माने बढ़ाई दबो किंतु विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ता निजर कोनसी चेंज हुए नहीं कैटलिस्ट रो किछि चेंज हुए नहीं. So that is the role of a catalyst. Okay, now so in this particular what kind of a catalyst T.S. Eliot is mentioning in tradition and the individual talent. A silver, B platinum, C copper, D zinc. He uses the word platinum. He tells exact word कहउछन जे take a filament of platinum. तो जोटे कि मु एपन तो बुझी पालिनी ऑक्सीजन एंड T.S. Eliot कहछंती ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लैटिनम रो गोटे फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम रे कि कले हबो सल्फ्यूरस एसिड ता को मु तो कहीं जानि नै सल्फ्यूरिक एसिड जे H2SO4 विदाउट एनी हाइड्रोजन केमिति सल्फ्यूरस एसिड हबो मु जानि नै एपन तो एनीवे T.S. Eliot ता कहछन तो तांकर कैटलिस्ट ना हला प्लैटिनम. तो एठी से कोन कहछंती पोएट रो माइंड हला गोटे कैटलिस्ट. ये जो पोएटिक प्रोसेस था जो प्रोसेस से पोएट्री को क्रिएट करछंती माने माइंड रे तो तमे भाबिबो चिंता करिवो देन यू गो ऑन राइटिंग. तो एक माइंड ता हला गोटे कैटलिस्ट पोएटिक प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन जो तैयार जो केमिति पोएम ता लेखा होची सेटा होची केमिकल. दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट द theory of impersonality. Which statement about structuralism as a literary theory is false? एगुड़ा को बर्तन तमर ए जो क्वेश्चन गुड़ा को is of no use to you because after the syllabus was changed, so this will be of no use to you. किंतु जेहेतु अच्छे किसी जानी था. Which statement about structuralism as a literary theory is false? That means out of 4 options, 3 are correct, 1 is wrong. Option A, it focuses on the underlying structure of a literary text. B, the meaning of a text is in the interrelationship of its parts. C, binary oppositions are key to understanding a text. Very good. D, the individuality and personality of the author are important. So option D is wrong. Option D is for this question option D is the right answer and option D is wrong regarding structuralism because once new criticism ru author individuality personality को बाद करी दिया गला new criticism start हला 20th century 1920 onwards जोटी Eliot published his Sacred Woods, a collection of 20 critical essays. Which new criticism आसला author biography आरो कोनसी value रहिला नाही कि रहिबो भी नाही. तापरे हला विभिन्न टूल नै कि ताको इवैल्यूएशन कराउची बा एनालिसिस कराउले. ओके नाउ स्ट्रक्चरलिज्म से माने कहउतले Ferdinand D. Saussure said that स्ट्रक्चरलिज्म होची कि आमे गोटे अपार्टमेंट बा बिल्डिंग टे देखिले से बिल्डिंग रो माने ड्राइंग रूम रे जो ताकू देखि कि ड्राइंग रूम रो तमरो विंडोज और डोर्स करिवो कलर कॉम्बिनेशन करिवो ते समस्त कनेक्शन इंटर रिलेशन रे से ड्राइंग रूम बा से रूम ता सुंदर देखा जाए किंतु तमे मनकर सेही झरकाटा को नै जीवो जो गोटे सुंदर झरका करछ विंडो करछ से झरकाटा नहीं बाहर फोपाड़ दे आसो लोक जे देखिए कहे हाँ गोटे कौन पड़ी तार ब्यूटी से मैंने जापर तार ब्यूटी केतेबेले आसीबो ना जेतेबेले से जो ड्राइंग रूम को सिलेक्ट जो ड्राइंग रूम पे ताको से डिजाइन करा हेतला सेही ड्राइंग रूम रे फिट कले इट लुक्स ब्यूटीफुल तार एंटायर तार वैल्यू बदली जीवो. तो स्ट्रक्चरलिज्म होचे सेंती लिटरेरी टेक्स्ट रे ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द टेक्स्ट जो नॉवेलटे पढ़ो बा जहा पढ़ो तार प्रति यूनिट परस्पर इंटरलिंक्ड कारण इंटरलिंक कला परे तमे तार मीनिंग पाई पारि
That is called structuralism. So it focuses on the underlying structure, literary text structure, केमिति chronologically arrange करा हिची, तार noun verb केमिति combination, ता syntax केमिति रहिची. So every detail को तमे नहीं कि ताको analysis करिवो. The meaning of a text is in the interrelationship of its parts. तापरे binary opposition. Binary opposition है contrast. and तमे जेमती सलवार कमीज पिंचो बा ड्रेस पिंदुचो, तमे कोन contrast हेले their entire personality looks different. जने light blue रो ऊपरे navy blue रो dark किंबा ink turkish blue रो shirt पिंदिबो, it looks different because it has a contrast. Okay, so option D is the right answer. Who is the author of Grammatology, the book that first outlined deconstruction? It is actually our na hochi of Grammatology. Our real na ta hochi bohira na hochi of Grammatology. A. Roland Barthes, B. Jean Baudrillard, C. Jacques Derrida, D. Gilles Deleuze. The option C is the right answer. Jacques Derrida wrote of Grammatology. The deconstruction. Ideology and Ideological State Apparatus is an essay by A. Terry Eagleton, B. Karl Marx, C. Raymond Williams, D. Louis Althusser. एमाने समस्ते टेरी इगल्टन, कार्ल मार्क्स, रेमंड विलियम्स, लुई अल्थुसर एमाने समस्ते हेले सब मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स, लेफ्टिस्ट क्रिटिक्स, मार्क्सिस्ट. So this is written by Louis Althusser. Option D. Because I don't want to explain and waste your time kahi na egoda ko syllabus re tam manakar nahi. Since syllabus re tam manakar nahi, tenu akku padhai kiri आर किछि माने नहीं. ओके, who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? A. Kate Millett, B. Margaret Atwood, C. Virginia Woolf, D. Simone de Beauvoir. So it has a feminist criticism page. Those of you SSB पे जो again जो advertisement है, those who want to join appear in the SSB, this will be of help to you. This is feminist criticism. Feminist criticism re option C is the right answer, where Virginia Woolf wrote an essay called Shakespeare's Sister. So imagine karchanti that during the time of Shakespeare, Shakespeare को सबु जाक स्कोप मिलुथला, लेखिबा पे सबु करिया पे फ्रीडम मिलुथला. तो तांकर जो भौणी से समय जो भौणी हेतांते, the भौणी who is as talented imagination, as talented as Shakespeare, ये कौन से लेवल पे पहुंच पाए थांते, because that was the plight of women. That is what Virginia Woolf tries to show in her feminist criticism. Who is theory of collective unconscious attributed to? A. Sigmund Freud, B. Carl Jung, C. Jacques Lacan, D. Alfred Adler. It is collective unconscious hochi Carl Jung. He is a famous psychologist. Who is the writer of What is an Author? A. Jean Baudrillard, B. George Louis Borges, C. That is actually Jean-Francois Lyotard, D. Michel Foucault. It is option D. What is an author? It is Michel Foucault who writes. Can the Subaltern Speak is a seminal essay of A. Gayatri Chakravarti Spivak, B. Aizaz Ahmad, C. Homi Bhabha, B. Benedict Anderson. The correct option is Gayatri Chakravarti Spivak. Born in West Bengal and migrated to the United States. So he writes about the colonized people, the subaltern, those who are underprivileged, those who are oppressed. So there is, he writes, can the subaltern speak? Does the subaltern has the freedom, the liberty to express his mind?
Now, one of the best known allegories in English literature is that criticism part ta sari gala. जो criticism part तमर नहीं तो सेडा को मैं explain करेनी because unnecessary why should you waste your time जति कि तमर नुआ syllabus रे कौन अछि preface to Shakespeare Samuel Johnson, preface to the lyrical ballads, then study of poetry, then tradition and the individual talent, and last होछि the language of paradox by Cleanth Brooks. So up to Cleanth Brooks अछि. One of the best known allegories in English literature is A tale of two cities, B where angels fear to tread, C animal farm, D wuthering heights. Allegory is what? Saying something in a different way so that there is a hidden meaning. There is a hidden meaning. Directly surface meaning gote अछि, literally surface जो meaning देखा जाए गोटे प्रकार ता भीतर आ गोटे hidden meaning थाए. That is an allegory. So Chaucer time ru सबु बेले they used dream allegory. They used dream allegory. से allegory टा कराई तो से गोटे dream author writer गोटे dream देखिबो से dream रे से poem रे जहा जहा होची that is the story. So here आंक भितर किए होची dream allegory. So which is an allegory? वो तो dream allegory की है. A Tale of Two Cities, it's about the France and London and Paris, Charles Dickens. This is not an allegory because Dickens was his novels were mostly social realism. Where angels fear to tread, I think Foster. Then Animal Farm, this is George Orwell. The Wuthering Heights by Emily Bronte. This option C, Animal Farm. Where Animal Farm lekhi pig, Napoleon is the pig center and Animal Farm taku se kon karche na communism taku dekhaichen. What is so communism? What is life in Russia? So taku se kon karchen na to satirize that the animals manakara character nation. Some are equal, some are more than equal. In Animal Farm he said. George Orwell karo, I really like George Orwell very much. But Animal Farm ta plus 2 आरंभ करी कि आरंभ रो Animal Farm सबले थिला George Orwell का. Orwell का गोटे अछि dystopic novel 1984. अब George Orwell 1984 टा को काहे के लिखिथिले? तो he was himself, he was a great sympathizer of communism. Initially से communism बहुत praise करते हैं. तापरे somehow से जो entire working जो कौन हुए ना सबू इज्म रे देखो. आमर जिते पले world रे कौन थिला? राजा गुड़ा कल थिला, monarchy थिला. Monarchy टा replace हला कौन democracy रे. Democracy रे हला परे तापरे industrial revolution हला. Industrial revolution आसला परे गोटे rich और poor divide हे गला. जो मानकर पास पैसा रहला से पैसा ग्रो कले फैक्ट्री करी रिच बिकेम रिचर पुअर बिकेम पुअरर. तो कैपिटलिज्म हैला. तो कैपिटलिज्म रहला जे पृथ्वी लोकंकर समस्या समाधान ही पारलानी. कैपिटलिज्म दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. तापरे ताको एज अ रिएक्शन टू कैपिटलिज्म आसेला कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स का. तो मार्क्स भाबिले जे एंटायर वर्ल्ड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व through this ideology, communism. Again देखा गला communism है भी पूरा dictatorship पड़े गला गोटे no सबु जिनस state owned है गला. So that also was not a solution to all the problems because Marx जो premises गुड़ा को कही थे जे rich लोगों भीतर competition है कि सेमान destroyed है बे middle class कमी जीवो और finally सबु तो बेसी है बे working class तो poor लोगों सही माने है बे सही माने world को rule करी. जोटा मार्क्स करे तीनटा प्रेमिसेस थे. तीनटा जगह फेल मारला. धनी का संख्या बड़ी बड़ी चलची. काली न्यूज देखछ मुंबई बिकम्स द बिलियनर्स कैपिटल एंटर एशिया रा. तो धनी लोकंकर बिकॉज स्टार्टअप करी लोक माने यूनिकॉर्न कंपनी करी बहुत पैसा कलेनी.
So capital, so number of rich people grow करुची, middle class भी grow करुची. Even presently सब country कौन कले democratic socialism ने ये social welfare measure द्वारा टंकिका चाउल दियो, तांको फ्री इलेक्ट्रिसिटी पानी, तापरे तांको फ्री पाठ पढ़ा दियो स्कूल रे, तांको यूनिफॉर्म दियो, खाइबा को दियो, एमिति करिकरी लोकंकर कंडीशन को, पुअर लोकंको कंडीशन को इंप्रूव कर, तांको विभिन्न प्रकार अलाउंस दियो, भत्ता खाली दियो, या दे. सो दीज आर कॉल्ड सोशल वेलफेयर मेजर्स. तो ये सोशल वेलफेयर मेजर देकरी यू कैन इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द लिविंग कंडीशन, द इकोनॉमिक सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर. तो प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन सब खोजा होची विभिन्न वे रे. बर्तमान एटा चलची नाइदर फुल कैपिटलिज्म कोठी नहीं, सोशल वेलफेयर मेजर सबठे अच्छी. नाउ तो जॉर्ज ऑरवेल 1984 गोटे टाइम देथिले जे 1984 बेलू को रशिया चाइना सब डिस्ट्रॉयड हो जाते आ नथिबो कम्युनिज्म. इनफैक्ट खाली चाइना को छाड़ देले एंटायर ईस्ट यूरोप रे सब जगह कम्युनिज्म 1981 पट बंद है, माने आस्ते आस्ते रिवोल्ट करी करी कम्युनिज्म लोप पाइला. लास्ट रे 1991 रे गोर्बाचोव और बोरिस येल्सिन एमाने जे दी जण थिले सेमाने करी एंटायर रशिया टाइ यूएसएसआर जो थिला यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोल जोड़ा थिला सेटा भांगी भांगी कि सब कंट्री अलग अलग हो गला. बालूचिस्तान अलग हो गला, बायलोसिया अलग हो गला, चेचनिया, ऑल दिस थिंग्स, यूक्रेन एगुड़ा सब आगुरी थिले ना मिसिक्री सब अलग अलग हो गला. तो रशिया सेपरेट कंट्री हो गला. तो सी जॉर्ज ऑरवेल 1984 टाइम देथिले तो 1991 रे हला और 6-7 वर्ष पर हला. ओके, so in animal farm it is one of the best known allegories in English literature. The moment in a story when the protagonist makes a critical discovery or realization, often leading to a dramatic turning point in the plot, is known as A. Hamartia, C. Catharsis, B. Anagnorisis, D. Peripety. देखो जैसे एरिस्टोटल करो, एरिस्टोटल का केतरा जिनस मन रखते हो सब बड़े. गोटे जिनस है ट्रेजिक फ्लॉ, हेमर्सिया है ट्रेजिक फ्लॉ, कैथारसिस है purgation of pity and fear, purgation of emotions. What is that emotion? Emotion of pity and fear. अच्छा, anagnorisis है, anagnorisis आंसर हो anagnorisis. anagnorisis माने है जिते बेले गोटे लोकर मला बेलू कहते हनु मला बेले सत मला बेलू को सत कहे जिते बेले तुम रियलाइज करिवो जीवन रे जे मो कौन कौन भूल मो लाइफ रे. तो आज जहाँ हेची मो जीवन रे जो समय तुम जो रियलाइजेशन आसे सेटा को कहती एनाग्नोरिसिस. तो यू डिस्कवर योरसेल्फ जे मु गोटे जीवन में भल लोक नथिली, मो जीवन में बहुत किछि खराब काम करछि जोथि पे आज मु सफर कर. तो व्हेन मैन सफर्स एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ सेते बेले मनीष रियलाइज करे पछु अनेकरी जे मु कोन करछि कोन करछि कोन करि नै. ओके, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोरिसिस. सो anagnorisis is the right answer. If they be two, एड़ा होची literary term super question. If they be two, they are two so as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. Which figure of speech has been used in this quotation from Valediction Forbidding Mode? The most famous poem of John Donne. जोटा कि समस्ते पढ़ी. लास्ट लाइन रे लास्ट स्टैंजर जोर से करछंती लवर और बिलवर्ड का रिलेशनशिप तक से कहछंती गोटे कंपास संगे कंपेयर करछंती. से कंपास रो गोटे फुट फिक्स थाए आउ गोटे फुटटे आर पारटा हमर राउंडर जोटा हम कंपास कहू से मूव करे चारिपटे. So that is the relationship. So he tells to his Don tells his wife, Annie, don't feel bad. I am going on a tour.
but I am always drawn towards we are together drawn towards each other. ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ସେ କମ୍ପାସଟା ୟୁଜ୍ କରେ. So what is it? What kind of which figure of speech has been used? A. Paradox, B. Simile, C. Antithesis, D. Concept. What it is called? आपको मु फर्दर किछि एक्सप्लेन करिबिनी आपको कहते मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ता कोन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. कॉन्सेप्ट आमर हैला आरंभ हला फिगर ऑफ स्पीच कोठू सिमिली रु स्टार्ट हुई आमर. So what is a simile? Simile हैला comparison between two dissimilar object. Two dissimilar सबले जानता सिमिली हो कि मेटाफोर हो दीटा डिसिमिलर ऑब्जेक्ट संगे तुम कंपैरिजन करूछ. जनक ब्यूटी टाको गोटे गोटे फ्रेश समर इवनिंग कि गोटे ताको स्प्रिंग संगे तुम करूछ कंपेयर करूछ ता माने कोन एज दिस फेस इज एज फ्रेश एज स्प्रिंग. तो ये कौन होची स्प्रिंग होची डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउ मनीष होची डिफरेंट ऑब्जेक्ट आंक भितर जो कंपैरिजन करूछ से कंपैरिजन कला बेले ता मझिरे तमे दीटी वर्ड लिखि लाइक लिखिथिबो किंबा एज लिखि. जो सेंटेंस रे बा जो स्टैंजा रे लाइक और एज अछि कंपैरिजन बेले ताकू इमीडिएटली दैट इज कॉल्ड ए सिमिली. तो सिमिली रे कोन दी जिंस मन रखिबो देयर शुड बी ए लाइक और एज आउ गोटे जिंस रहिला कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट दीटा जिंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट that is called a simile. Okay, metaphor ta kon? Metaphor ta hoji again same comparison kintu like or as nahi setre means she is sorry mu kai sable see kahi ki he is as handsome as Hrithik Roshan. तमाने कौन तमें ऋतिक रोशन संगे ताको तमें तार हैंडसमनेस को कल किंतु ही इज ऋतिक रोशन चल तुम कहि दउछ तमाने कौन तुम गोटे पिलाटा कहले पूरा 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 ऋतिक रोशन एटी तुम मेटाफर यूज कर कारण तुम ताको ऋतिक रोशन कहूछ मेटाफर यूज करछ से किबा ही इज एज स्ट्रांग एज अ टाइगर ही इज एज स्ट्रांग एज अ टाइगर तमाने गोटे टाइगर भलिया से स्ट्रांग दैट सिमिली and as like किंतु तुम जो कहो he is a tiger again that is also a comparison ताकू तुम टाइगर साथ तुलना करछ किंतु डायरेक्ट कंपेयर न करी कि इनडायरेक्टली करूछ सेठी तुम ना तुम टिके मुंडटा खटाया पड़िबो ब्रेन टाकू यूज करिवो जे काहे कि ताकू से टाइगर कला टाइगर रो को एस्पेक्ट को क्वालिटी आर को क्वालिटी संगे समान अछि बोली ताकू टाइगर कहा जाउची. हमरे टाइगर जेंती फेरोशियस पूरा पाउंस करिवो किछि न भाबिकरी बट पाउंस करे तो ये सत्य की फेरोशियस. तो टाइगर रो फेरोसिटी संगे आर आकु तुलना करा जाय दैट इज कॉल्ड अ मेटा. ही इज एज स्ट्रांग एज अ टाइगर सिमिली लाइक लागिला एटा हला सिमिली. किंतु मुझे अगर कही भी वो शेर है ही इज अ टाइगर एटी लाइक नहीं कि एज नहीं एटा होची मेटाफर. दिस इज अ मेटाफर. ओके मेटाफर को जता आहुरी टाणी दबो एक्सटेंड कर दबो सेटा हे जाय कॉन्सेप्ट. सेटा है कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट कौन? कॉन्सेप्ट इज एन मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट मोस्टली मेटाफिजिकल पोएट्स ही यूज करथले तो ताकू सेटा कहते मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट. तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कौन सेटा गोटे एक्सटेंडेड मेटाफर मेटाफर को आहुरी एक्सटेंड कर देले सेटा है गोटे कॉन्सेप्ट. ओके so option D is the right answer. Hubris
मोस्ट नियरली मीन ह्यूब्रिस माने कौन ह्यूब्रिस होची अहंकार एरोगेंस प्राइड ए एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस बी डिस्ट्रक्शन और डिफीट सी पिटी एंड फियर डी पोएटिक जस्टिस इज ह्यूब्रिस मीनिंग होची एरिस्टोटल जो ह्यूब्रिस कहछन्ती ता माने हला प्राइड एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस Then, in Act 5, Scene 3 of Romeo and Juliet, Romeo believing Juliet to be dead due to a lapse of communication between Romeo and Friar Lawrence ends up killing himself out of grief. Though the audience knows that Juliet is only sleeping, it is an example of what? माने literary terms रो question एई भली भाबरे आसे सेति पई literary term को तुम definition मन रखिथिबो example किछटा मन रखिबो एटा होची literary terms. So what is it? माने Juliet is dead and out of grief Antony kills himself. That is the story end of Romeo and Juliet. So Juliet, due to a lapse of communication between Romeo and Friar Lawrence, so he ends up killing himself out of grief. So the audience knows that Juliet is only sleeping. It's an example of A, verbal irony, B, dramatic irony, C, situational irony, D, Socratic irony. Type which is, it is an example of what? Tell me. What it is? Verbal irony माने words तमे जहा कहूथबो ता मीन कर नथबो बड बदमाश को कहबो तो भलिया माने ते what I should say such a fine polite humble gentleman कोठी देखिनी देखला से रोग टेथिबो तमे मीन को तो से रोग टे किन ताकू तमे कहूथबो what you are saying you do not mean that is called irony तमे जहा कहूथबो सेटा तमे मीन कर नथबो ताकू कहते irony verbal जो words use करके तमे irony टे express करछ that is called verbal irony. This is a dramatic irony. Option B is the right answer. It is a dramatic irony. Situational irony कौन तमे गोटे भोजी की जाइथिबो बहुत बढ़िया खाइबा आइतबो भाबी की जाइथिबो देखला बेलू को खाइबा अति खराब खाइबा किछि एकदम ordinary खाइबा आइथिबो that is a situational irony. You expect something, the situation will be something and the situation turns out to be something. सेटा हला situational irony. ताकू कहते dramatic irony where ऑडियंस जानी चंती जे स्टेज रे जा होचे सेटा होचे गोटे इमेजिनेशन इट इज सिंपली एक्टिंग तो क्लियोपैट्रा सॉरी जूलियट मरिनी जूलियट जा सोईची चुप होके आखि बंद करी पड़ी किंतु कैरेक्टर जे आउ स्टेज रे जो अन्य कैरेक्टर माने अछंती से माने जानंती नै कोन हेची सेटा को कहंती ड्रामेटिक आयरनी आको ड्रामेटिक आयरनी एथि पय कोहा जाउची बिकॉज़ ये ओरिजिन करथला ग्रीक ड्रामा रे ग्रीक ड्रामा रो ओरिजिन करथला बले ता नाटा ड्रामेटिक आयरनी कोहाइची. So option B is the right answer. All the world is a stage and all the men and women merely players. Which figure of speech is used in this line of Shakespeare? A, simile, C irony, B, metaphor, D, allusion. All the world is a stage. Life is a stage. Life को का संगे कराइची इटिया like और as किछि नहीं. All the world is a stage. All the men and women merely players. So all of us we are players. We all individual in stage. But drama stage in life for stage. The beginning अच्छे end अच्छे सरी जीवो. एमती all of us we are players. किछि समय पे तमे तमरा role टाको play करिबा. Then you end your life. So it is a question. It is a example of a metaphor. And like or as nahi, life is compared to a, and we are all compared to a player. Players, a life is compared to a stage. So option B is the right answer, metaphor.
Who first articulated the concept of negative capability? A. William Shakespeare, B. T.S. Eliot, C. John Keats, D. Samuel Johnson. The right answer is K. समस्त जानते जानिए. It's a very easy question. वो आंसर करो संगे संग. Negative capability. ये जो phrase था, who coined this phrase? तमें immediately answer टा लिखिया कथा थिला. एते भाबी के लिखुछ माने कोन? It is John Keats. मु सबले भाबे Keats, John Keats सम्मान टू बयस सान थे. He died at the tender age of 26. 26 वर्ष लोकरे बयस रे मरि छन. 26 इयर्स भितरे से एमिति कोन गुडे फिलोसफी कहि देबे तांको ब्रेन ता जत्ते जा को ये लर्नेड हे थाई पारन. He had a tremendous love for Greek mythologies and other things. केवड़ा थिला. तेणु सी सते बेले he wrote a letter to जेतबे एक्समस रु फेर गोटे क्रिसमस ईव रो प्रोग्राम रु फेरुचंती बाटेरे से हठात करी गोटे भाबिले जे गोटे नेगेटिव कैपेबिलिटी कोन. he used the term negative capability. किड्स कर जोड़िए टर्म सब दीटा फ्रेज यूज करचंती. गोटे हला egotistical sublime. इगो रु आरंभ करछन जोड़े कि से egoistic जोड़ा माने which egotistical sublime or egoistical sublime something. Okay. How negative capability. ये दीटा फ्रेज किड्स का रहउची फेमस. इगोटिस्टिकल सब्लाइम टॉक से वर्ड्सवर्थ को कहले जे वर्ड्सवर्थ को गोटे इगोइस्टिक वे रे सब बेले से निजे एटा ही सेज दिस इज ब्यूटीफुल दिस इज दिस ताका सेइडा गोटे रहिला. तमे लेटर ऑन देखिबो इन रियल पर्सपेक्टिव रे एमाने थिले लेकर साको कहा जाउथला. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आउ रॉबर्ट साउदी आंकु कहा जाता एमाने लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स लेक पोएट्स. तो आंकु को लेक डिस्ट्रिक्ट थिले बोली एमाने कहंती लेकर्स. को माने बायरन एमान सब कहंती. शेली बायरन एमान कहंती. शेली आ बायरन किड्स एमाने ले यंगर रोमांटिक्स. एमान को सब गोटे ग्रम्बल करथिले. गोटे थिला तांको भीतर गोटे लाइक दे वर वेरी डिससैटिस्फाइड विथ वर्ड्सवर्थ एंड अदर्स. जे तमे जो जिंस करिया चाहूतला अधा करिक रहि गला. आउ तमे केबे चाहुनो जे हमरो आमे किछि आमे उठू हमरो पोएट्री रो किछि वैल्यू था तमे एडा हमकु एनकरेज करिया को केबे करूनो. दैट इज तांकर भीतर भीतर तांकर एटा थिला माने प्रॉब्लम. देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीस टू ग्रुप्स द ओल्डर रोमांटिक्स एंड द यंगर रोमांटिक्स. तो सेति पे किड्स वर्ड्सवर्थ को कहतो इगोटिस्टिकल सब्लाइम. नेगेटिव कैपेबिलिटी व्हेन ही रोट अ लेटर when he was discussing this with his brothers he कहला जे इगो नेगेटिव कैपेबिलिटी होची कि आमे जते बेले गोटे जिंस को देखुचे सेते गोटे फैंटेसी हेई थाउ गोटे इमेजिनेशन हेई थाउ. तो जदि आमे सेही भीतर आमे मजी गलु निजकु देन एनीथिंग ए राइट आर्टिस्ट जोटा को ब्यूटीफुल भाबुची किंतु अन्य तक साइंटिफिकली जदि एनालिसिस करिवो जे इट इज इलॉजिकल इट इज इरेशनल. तो किड्स कहंती जे तम रैशनैलिटी लॉजिक एको सब फोपाड़ ताकू तमे पूरा पूरी इग्नोर करिकरी सिंपली एंजॉय
द ट्रूथ जोटा तमे फील करछ दिस इज ब्यूटी जोटा कि किड्स कहछन्ती ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी सो सेकंडली यू फॉरगेट अबाउट रीजनल लॉजिक जदि रीजन लॉजिक दबो तबे एबा तुम पाई परिबन सो रीजन लॉजिक को किछि समय पे मुंडरू काढी दियो ताको लॉजिकली एनालिसिस करनी कि ताको रैशनली एनालिसिस करनी anything we are saying that yes the nighting is beautiful, the mahol is beautiful, forget about the reasonal logic ताको कहते नेगेटिव कैपेबिलिटी जोठी तमे रीजन लॉजिक एगुड़ा सब रैशनलिटी सब जाक तमे विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ जोटा कि कॉलरिज कहते जे जानी जानी कि विलिंगली तमे तमरो डिसबिलीफ टाको सस्पेंड करो भूत आसीची भूत साई मु कथा कहूची बस एक्सेप्ट इट negative capability is that don't use your rhyme or reason. I hope you understand negative capability बुझ पारछो ना negative capability एटा होची kids करो one of the two most important egotistical sublime और egoistical sublime और egotistical sublime मु टिके खाली देखि कहिबी हैला ठीक just a minute we see this egotistical sublime और egoistical sublime टिके देखे Yes, it is egotistical sublime. Now, next. In which essay did T.S. Eliot introduce his concept objective correlative? A. Hamlet and his problems. B. Tradition and the individual talent. C. Four Elizabethan dramatists. D. The metaphysical poets. So, in which essay did T.S. Eliot introduce the concept of objective? The answer is option A. Hamlet and his problems. Where T.S. Eliot says the Hamlet is one of the greatest plays of Shakespeare, the longest play of Shakespeare. Kintu T.S. Eliot कहले जे Hamlet is an artistic failure. Artistically देखिले Hamlet is a failure. काहे कि ना because Hamlet रे objective correlative ना. Objective correlative माने हैला तमे गोटे series of events की chain of events देखेबो. जो चेन ऑफ इवेंट्स अल्टीमेटली आसिक पहुंची हैमलेट एक्शन रे ये चेन ऑफ इवेंट्स सो द एक्शन इज जस्टिफाइड तेणु तमें सेमती देखब केमती ऑब्जेक्टिव ना थ्रू ऑब्जेक्टिव होची कोन बाहर तमें गुडे इंसिडेंट्स देखैबो प्ले रे जे ए इंसिडेंट हला तापरे फॉलोड बाय दिस इंसिडेंट देन फॉलोड बाय दिस इंसिडेंट हेकरी जो ऑब्जेक्टिव को परस्पर कोरिलेट करिकरी Hamlet kills his uncle Claudius. Same objective correlative T.S. Eliot did not find in Hamlet. That is why he called that Hamlet is an artistic. जोटा कि T.S. Eliot objective correlative ना देखिर करछंती. Samuel Johnson तांको preface to Shakespeare कहछंती जे Shakespeare को जो climax scene गुडा को अछि सेटा भारी sudden थाए माने गोटे ग्रेजुअल वे रे स्टेप बाय स्टेप जाएनी बहुत जगह रे सेटा अछि ही फाइंड दीज आर द फॉल्ट्स ही फाइंड्स इन शेक्सपियर सेगुडा को प्रॉपर वे रे से इमोशन तक भी से ठीक से कंट्रोल करि पारंते क्लाइमैक्स सीन बेलकु दैट इज जॉनसन सेड आ ताकू टीएस इलियट गोटे टर्म करछंती ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज फेमस एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से कहछंती दैट इज व्हाई आई से कहछंती मोर सेही रीजन पे कहबी The Hamlet is an artistic failure of Shakespeare. Which term is used? Which term is used by Aristotle in Poetics for the shift of the tragic protagonist's fortune from good to bad? Aristotle तांका पोएटिक्स रे कहछन्ती गोटे कैरेक्टर रो फॉर्च्यून टा भलो रु खराब को गला बा खराब रु भलो को जाईछि
आइदर से rags riches हेतिबो किंबा rich रु राजा और रंक रु राजा हेतिबो किंबा राजा रु रंक हेतिबो ए जो सडन शिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून भाग्यर एते बड़ सडन चेंज ता एरिस्टोटल ताको कोन कहछ को टर्म यूज करछ ए डिनोमेंट बी पेरिपेटिए सी माइमेसिस डी हेमर्सिया Yes, because denouement होची final. तापरेला mimesis is imitation. Hemercia tragic flaw. It is peripeteia. Next, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. This quotation from 1984 is an example of A. Epigram, B. Climax, C. Paradox, D. Metonymy. War is peace. What is it? सब opposites. War रो opposite है ला कौन? Peace. Freedom रो opposite है ला किए? Slavery. Ignorance रो opposite है ला? Not exactly. Ignorance रो opposite होची knowledge. So it is a strength. But these are all antithetical ideas. This quotation from 1984 is an example of what? A. Epigram, B. Climax, C. Paradox, D. Metonymy. This option C. Paradox. Two opposite ideas coming together को कहते paradox. War, peace, opposite ideas together ताको कहते paradox. आउ गोटे जिनस है देख ओनोमेटोपोइया भी हमर अछि ऑक्सिमोरन गोटे अछि ओनोमेटोपोइया है कौन जेमती साउंड टा जो वर्ड टा कहै छी तार साउंड टा भी सेही भलिया जेमती हिसिंग ऑफ द स्नेक ताको ओनोमेटोपोइया कहନ୍ତି ऑक्सिमोरन होची एबे अगेन ऑपोजिट्स तो पैराडॉक्स होची एटा आ गोटा डी होची मेटोनिमी 71 because I could not stop for death he kindly stopped for me. Which rhetorical device has been used in this quotation from because I could not stop for death? It's Emily Dickinson poem. I could not stop for death. He kindly stopped for me. So who is he? What is it? A. Personification, B. Symbol, C. Synecdoche, D. Allusion. Oh, rhetorical device usage. Which rhetorical device has been used here? Personification, symbol, synecdoche, allusion. It is personification. Death को personify करा है because I could not stop for death. He kindly stopped for me. He के? He is death. So death is given a human form. So it is a personification. ताको person भला treat करा होची. So personification. The literary device of attributing human emotion or responses to nature, inanimate objects or animals or abstract concept is called A. Pathos, B. Oxymoron, C. Periphrasis, D. Pathetic fallacy. Death be not death because I could not stop for death is a poem by Emily Dickinson. Eta कौन? The literary device जोटी की ह्यूमन इमोशन को गोटे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कि नेचुरल ऑब्जेक्ट को दिया जाए लाइक इट इज रेनिंग वाटर आम इट इज रेनिंग रेन टा कौन करे वर्षा कौन थाए पानी आसे कि सपोज आम कह इट रेनिंग टीयर ड्रॉप्स तो ये तुम ह्यूमन इमोशन टीयर
केतेबेले मनीष कांदे व्हेन द पर्सन इज सैड इज ग्रीफ स्ट्रिकन सेतेबेले पर्सन क्राइज तो सेतेबेले तार दुखटा को इमोशन ता तुम देखिबो द रेन ड्रॉप्स द रेन इज these are not rain drops but tear drops. So that is called a pathetic fallacy. That is called a pathetic fallacy. Poetic justice is a literary device which designates that A. Virtue suffers and evil prospers. B. Virtue is ultimately rewarded and evil is punished. C. Evil ultimately defeats virtue. D. Evil defies natural justice and is not punished. So poetic justice ta kona? Poetic justice is sabala option B is the right answer where virtue is always rewarded and evil is punished. Tebe ame janlu eta poetic justice. So ei jo jinsa ta ku Samuel Johnson preface to Shakespeare कहथिले that Shakespeare King Lear ending ku neki कहथिले that Shakespeare always does not stick to poetic justice. आमे ड्रामा बा इमेजिनरी स्टोरी रे पोएटिक जस्टिस करि परिबो पोएटिक जस्टिस कोन रियल वर्ल्ड रे ही परची हम रियल लाइफ रे केबे पोएटिक जस्टिस बहुत कम जगह रे हुए किंतु नॉर्मली हुए नी जेंति गोटे लोक मिछ कहितो लोक को बहुत हैरान करथिबो गां माने मु देखिछि तापर हठात से पैरालिसिस की पड़ी जाए लोक माने कहत भल लाइछि एत्ते लोक को हैरान करता देखो केंति पडला इना पैरालिसिस की घर पड़िछि आकु कोनति पोएटिक जस्टिस पण एटा सबले हुए कि हमें देखिछु इविल केते कुकर्म करी करी खराब काम करी करी से केते उन्नति करी जाइछन किछि तांकर हेनी so that is not poetic justice. So poetic justice ता राइटर को राइटर इज ए क्रिएटर ता निजे स्टोरी निजे कैरेक्टर निजे तैयारी करछि सेंस राइटर ता निजर लेखा रे पोएटिक जस्टिस दबा कथा so that a message is sent to the society जे खराब काम कले एया हबो फल भल काम कले एटा हबो तार फल that is the responsibility of a writer. One of the classic examples of a work of magical realism is A. Catcher in the Rye, B. The Grapes of Wrath, C. 100 Years of Solitude, D. Crime and Punishment. That are great books. J.D. Salinger, Catcher in the Rye, Grapes of Wrath, John Steinbeck, 100 Marquez, Garcia Marquez. It is a magic realism. Options: Crime and Punishment is Dostoevsky. So what is a magic realism? Magic realism होची हमें सरियलिस्टिक माने तमर जो नॉर्मल रियलिस्टिक वर्ल्ड रे जा होची हमें आइडेंटिफाई कर दोच एनालिसिस करे को टाइम पाउनो देखो टिके सरियलिस्टिक लेवल को नहीं जीवो तापर जेमती फ्रांस काफका कर मेटामॉर्फोसिस गोटे मनीषटे सडनली गोटे सेल्समैन टे ग्रेगर सैमसा सी गोटे सकाळ उठी देखला बेलू से गोटे बड़ इनसेक्ट है जायंट इनसेक्ट है जाइए उठला देखुची से ह्यूमन बीइंग नाही तापर सी हला कोन तक ब्रेड अर्नर से तक फैमिली रो तापर ता घर लोक तक भल पाउनंती तो कारण से तक पे गोटे लायबिलिटी हला किछ रोजगार करनी बर्तन इनसेक्ट है गला तो काफका ताकू ए जो जिंसटा मनीष को गोटे इनसेक्ट करदबा गोटे सरियलिस्टिक लेवल को से नहीं गले रियलिज्म ढेर ऊपर को नहीं गले सो दैट तमे ताको आइडेंटिफाई निजु को न करिकरी सेठी तमे बसे एनालिसिस करि परिबो कि देखो गोटे ब्रेड अर्नर जतबे लायबिलिटी हो जाए लोकंकर समस्तिंकर नजरिया बदली जाए लोकंकर फैमिली मेंबर्स कर एटीट्यूड बदली जाए जेपन तम पाखे पैसा अच्छे तुम देखो ना नॉर्मल लाइफ रे हम देखू आम फैमिली समस्त फैमिली जेपर्यंत तुम पैसा दौथबो साहाय्य करथो सेपन तो बहुत भल होइतबो द मोमेंट तुम सेटा बंद करदेल तापर तुमको किए पचारे लोक एक्सेप्ट भी एत अनग्रेटफुल हो जाती they never think that this man has done so much for us for the last 50 years जब तार अर्निंग बंद हो जाए बस ये बेड रिडन हो जाए तार केयर कहीं नहीं होते तो ये जो जिनसटा ताको कहते सरियलिस्टिक इफेक्ट जोटा से यहाँ हूँ 100 years of solitude हूँ मैजिक रियलिज्म where in a realistic world नुहे तमें as a audience or a reader गोटे नॉवेल पढ़ी नॉवेल फेमस नॉवेल
तो से नॉवेल पढ़ला बेलू तुम निजे फील कर हाउ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन इंटरेक्शन गोज ऑन चेंजिंग. Did he who made the lamb make thee? In this line from Tiger by William Blake, lamb is used as what? A. Symbol, B. Simile, C. Irony, D. Apostrophe. Lamb is used as what? A mystical thing, symbol of mysticism. Symbol. Tiger symbolizes ferocity, lamb symbolizes mysticism. Black copy. Well, a lamb normally symbolizes innocence, because as innocent as a lamb. Niriya ame jo kochu lamb taku. Which of the following is an example of surrealist literature? A. The Time Machine by H.G. Wells. B. The Power and Glory of Graham Greene. C. Franz Kafka's The Metamorphosis. D. Joseph Conrad's Heart of Darkness. Yes, Franz Kafka's The Metamorphosis, the novel. That I just कहली Gregor Samsa. Who defends Shakespeare's violation of the three dramatic unities? A. John Dryden, B. Samuel Johnson, C. S.T. Coleridge, D. Alexander Pope. Who defends the three unities? Who defends Shakespeare's violation of the three dramatic unities? Already mu padhaichi preface to Shakespeare, Dr. Johnson, Samuel Johnson. It is option B, Samuel Johnson, because normally Samuel Johnson was a neoclassicist. So, ଯେତେବେଳେ classical theory कौन Aristotle एमानकर theory है, there should be the three dramatic unities: unity of time, शेक्सपियर को जिते क्रिटिसाइज करागला जे शेक्सपियर ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी क्लासिकल प्लेस गुड़ा को जो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन को टोटली मानी नाहंती वायोलेट करछंती बिकॉज यूनिटी ऑफ टाइम माने से 24 आवर्स भीतर गोटे फिक्स टाइम पीरियड भीतर हबो यूनिटी ऑफ प्लेस होची गोटे पर्टिकुलर एरिया भीतर सेटा हबो जोटा कि लोक विश्वास करि परिबे तमे देखैबो तमें देखे मुझे अच्छे सका अच्छी दिल्ली रे दिन 12टा मु यूनाइटेड स्टेट्स देन दिन 3टारे कनाडा रे संध्या 6टारे आसिक पेरिस रे इट इज इम्पॉसिबल गोटे लोक एतिक समय भीतर एत जगह जाई परिबो नै इट इज नॉट इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल सो यूनिटी ऑफ प्लेस however unity of action that means the plot goes on moving in a linear fashion just and reaching the definite conclusion. So Johnson कहछंती जे जॉनसन ए जगह रे शेक्सपियर को से डिफेंड करछंती से कहछन नै शेक्सपियर जहा करछंती ठीक करछंती काहे कि ना तांकर हिस्ट्री प्ले से लिखछंती मोस्टली शेक्सपियर तीन प्रकार प्ले लिखछंती ट्रेजेडी लिखछंती कॉमेडी लिखछंती आ हिस्ट्री प्ले लिखछंती तो हिस्ट्री प्ले रे तमे टाइम प्लेस केमिति रखि परिबो नै टाइम और यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस रखि परिबो नै because it is all about the kings. So impossible कारण गोटे किंग गोटे राजा हैला तापर से बड़ हैला तापर वॉर रे गला विभिन्न बैटल कला ए जागो जाईची से जागो जाईची इजिप्ट जाईची फ्रांस जाईची रोम जाईची so how can you maintain the unity of place? Impossible. So unity of time is also not possible and unity of time is 24 hours. It's about the life of a king. How can you show in one day what happens to a king? So history and it's history plays that too. History माने कौन जनकर the entire all the growth and development of a particular person at a particular time period, that is called history. So बाकी रहिला शेक्सपियर का unity of action. So unity of action Dr. Johnson कहछंती yes Shakespeare has maintained that unity of action.
कहीं प्लॉट गुड़ाक दो his plots are loose किंतु still he has maintained the unity of action. The Fisher King and quest for the Holy Grail are the underlying myths that provide a framework for one of the poetical works of T.S. Eliot. Identify the work. को जगह Fisher King myth का use कराई छी. Tyresus or Fisher King. A. The Hollow Man. B. Gerontion. C. Four Quarters. D. The Westland. So obviously the Westland. Option D. Notice a Fisher King myth का use करछन. Because of the curse, he becomes the entire war has become the entire area has become barren, like barren and infertile. A literary device that means expression of doubt or uncertainty is A. Aporia, B. Anticlimax, C. Foregrounding, D. Rhetorical question. This option A. Aporia. Aporia means expression of doubt or uncertainty. Where you have doubts, where you have uncertainty. ताकू कहा जाए aporia. Who is often referred to by literary historians as the father of expressionism? A. Eugene O'Neill, B. Elmer Rice, C. August Strindberg, D. Wyndham Lewis. काहाको कहते father of expressionism? Very easy. Because who did it? It was option C, August Strindberg. Because Eugene O'Neill was very much influenced by the expressionism technique of August Strindberg. Expressionism है कौन? A technique where the playwright, dramatist shows the psychological emotions, psychology of the character. तारा fear, तारा anxiety, एक जिनस को वेरे से ताको एक्सप्रेस करि परिबो स्टेज रे. ताको कहती एक्सप्रेशनिज्म. कोठी हटा देखियो जाने खाली पियानो बजाउची. एटा होचे एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक. जोठी तमे तमरो इमोशन ताको एक्सप्रेस करूछ. साइकोलॉजिकल इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस जोटी करा जाय ताको एक्सप्रेशनिज्म. जो जदी ओटे बेसी दिन लास्ट कलानी एंड ताको यूजिन ओनेल यूज करछन एम्परर जोन्स रे. Elmer Rice ये भी playwright, American playwright. Wyndham Lewis is British. So it is August Strindberg. Now, this is a poem. Question number 81 to 90. Read the following poem and answer the question that follows. When God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can. Means when God first made man, ताके पाखरे गोटे glass of blessings थिला. से बसी लोकों को देले, दान करले. So let us go on giving, pour on him all we can. Let the world's riches which dispersed lie. The world जत्तको resources, property, wealth, जिनछ तराई पड़ी ची, ताके एकाठी गोटे जागा वाणी की गोटे span करिबा. They contract into a span and go on giving it to man. मनुष्य को तैयारी करे ताको सबु दे दवा. So strength first made a way. प्रथम देले strength, then beauty, then wisdom, honor, pleasure. So a chronological order रे God went on giving his blessings onto man. First he gave strength, then beauty, तापर देले wisdom, intelligence, brilliance, honor, prestige, dignity. Then he gave pleasure, आराम से रहो. When almost all was out, एमती देई चलछंती पूरा फ्लोर रे.
Suddenly भगवान टिके अटकी गले. God stopped a bit. He said, God made a stay. Perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom. तांको जो series of treasure wealth तांक पाखरे अछि मनुष्य को सब दे दे जाय लास्ट रही रेस्ट जोटा कि आम कहूँ ओडिया रे विश्राम. भगवान कहले ना 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 सब देदेले असुविधा तो सब देदेवी तो मत भूल जीव मु कौन देछि जानि परिबोनी से तास पूरा एंजॉय करिवो लाइफ टा. सो आई मस्ट कीप समथिंग फॉर व्हिच मनीष मते खोजिबो. आ मनीष भगवान और मनीष को भितर द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड विल बी कैन बी एस्टैब्लिश. जेमती आमे जेते हमर बहुत बढ़िया चले सब जिंस किछि प्रॉब्लम न थाए वी नेवर थिंक ऑफ गॉड. आमे मंदिर कथा भाबुना भगवान कथा भाबुना दिन राति व्हाट्सएप देखू किंतु प्रॉब्लम रे पड़ी गेले कार देह खराब हे गेला का को कैंसर हे गेला कि गोटे परीक्षा देला पाइलानी किछि सेतेबेले सडनली विपद आसिले व्हेन देन देयर इज अ प्रॉब्लम व्हेन देयर इज अ कैलामिटी सडनली वी रियलाइज ओहो भगवान तापर चलला मंत्र जप कर ये जप कर ये उपास कर से उपास कर एठी ए मंदिर चल से मंदिर चल देन यू रिमेंबर गॉड. तो विपद पड़िले भगवान को खोजे लोक जिते विपद न थाए भगवान से खोजे. So it indirectly it is this. So God hold back, withheld rest. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me. So एटा जे मु देई देबी रेस्ट को देई देबी then ये मते परिवन से मोर जे प्लेजर गुडा करे will be immersed in that pleasure. He will never think of me. And rest in nature, not the God of nature. So both should lose it. So man will be a loser because man can never have any interaction with God. And God will be also be loser because God will not will lose his creation. तेणु से कहले जे तेणु मनीष भगवान को सब बेले डाकिबो बा मनीष भगवान को भीतर जो सबलाइम प्योर रिलेशनशिप रहबा कथा should be there. केते बेला होबो ना जदी मु गोटे ता भीतर रखी देबी रेस्ट को रखी देबी जदी भगवान कहिथांते जन्म करी के मनुष्य को let us say that Bible or scripture को भगवान मनुष्य तैयार करछन. So we human beings are not created by God. We are product of evolution. We are product of DNA. Deoxyribonucleic acid. So we are product of DNA. Darwin का theory अनुसार and scientific that is true also. किंतु let us say भगवान कहते कौन सी लोकर देह केबे खराब होबो ना लोक खातिर करथाने कहा को people would have been just mad जत्ते irrational हे परिवे हे थांते. So yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. So let him keep the rest. इटी रेस्ट माने कौन रेस्ट माने विश्राम नुहे रेस्ट होची has a double meaning. इटी रेस्ट होची सब जगह जहाँ मु देइछि सब जगह से ता पाखे रखू but keep them with repining restlessness. तेणु सब बेले गोटे रेस्ट पे विश्राम पे आराम पे फुर्सत पे विकल हो रेस्टलेस. लेट हिम बी रिच एंड वेरी that at least if goodness lead him not yet weariness may toss him to mind. जेते बेले से काम करी करी भलो मनुष्य हेतिबो तो से सबले भगवान कथा भाबिबो जो लोक भगवान को विश्वास करी खराब लोकटा हेतिबो तो सेते बेले से केते भगवान कथा एमिति अवस्था रे पहुंचीबो जे एते टायर्ड है तो सेते कहबो वो भगवान मते टिके फुर्सत. If goodness does not bring him to me then weariness tiredness will bring him to. This is George Herbert's poem. Now this is the questions. How is God characterized in the first stanza? A, God is almighty, God is generous, God is drunk with power,
D. God loves his creation. Yes? भगवान माने पूरा पूरी मन दिल खोलिकी सब दे जाउछन ना. So it is God is generous. Option B is the right answer. God is because he is generous. पूरा दिलदार. तेणु सब गोटी गोटी दे हठात कि रहीगल ना यही गोटे जिनस मु रखिदी. How is God characterized in the first stanza? Anyway, the same question is repeated. God is generous. पिले क्लास करछो तो Monday to Saturday at 9:15 PM. Grammar class ता हबो सबले regularly attend करो. It's a free class. How are the ideas in first two stanzas structured? Ideas ता केमिति structured करा हिची? Randomly करा हिची ना chronologically करा हिची? A. In contrast and comparison. B. At random. C. In chronological order or from particular to general. It comparison contrast अच्छी किछि नहीं. Just story भलिया. God when he created human being, there was a glass of blessing. Hold a water glass of blessings and गोटे पर गोटे से दे चलले. तेरा पर से last ठीक कले no. गोटे मु रखी देबी. And what is that? That is rest. He hold back rest and ultimately what happened? After holding back rest, so he said, if a human being is good, then he will ultimately come to me. If a human being is not good, he will be so tired and so he'll be so tired that ultimately the tiredness, the weariness will bring him to. So it is in a chronological order. Oh. Sorry, one. Anyway, I will teach. What is the central theme of the poem? A. God is not too indulgent to spoil man with his blessings. B. Man adores world's riches. C. Man looks forward to God's blessings. D. Man depends on God for his survival. The central theme is God is not too indulgent. Bhagwan is judicious. भाभी चिंती की काम करती. तेणु जहाँ जेति थिला गोटे जिनस एमती रखीदेले जे जो जिनस पे मनीष सब बेले भगवान को खोजिबो. Option A is the right answer. God likes to control. What does alone of all his treasure in line 9 refer to? A. Beauty. B. Rest. C. Honor. D. Wisdom. It is rest. Option B. God likes to control humans by keeping them A. Away from evil. B. Poor. C. Alone. D. Without rest. This option D. Without rest. Okay. 85 questions allow, 15 more questions are there. We'll do it.